So today what we'll do is that we'll try to cover two such very useful tools which will help you in understanding agentic AI architecture, because the way we are doing it is a hands-on approach to make you go in more depth into what is agentic AI. And one of them is a very widely used tool which is ChatGPT. But what I've seen is that most of the people are still at the level of using ChatGPT for prompt engineering. So prompt engineering is all about learning English and all, but there are a lot of other things that are unexplored in ChatGPT. So let us start first with ChatGPT. And what I have given you is one of the links which is even mapped to a website which I just did in the morning. So if you click on that link, it opens up something, a ChatGPT layout. It's a chatbot that I've created. So today we'll help you create one of the chatbots using ChatGPT, but only for paid users. But for non-paid users, they can use that. They can't make one. So maybe you have a paid account, no? So you can create one chatbot. So with that concept, we'll learn something which is called RAG, Retrieval Augmented Generation. होता क्या है कि जो generative AI है, they're already taught on some standard English language, 11,000 novels and 4.5 gigabyte words and stuff like that, Wikipedia. So they are basically trained on the English language, but they are not specifically trained on your particular content. In order to train them on your specific content, there's a concept called RAG, Retrieval Augmented Generation. Retrieve karo your data, augment karo with the generic data which is there in this thing, and generate the new topic. Generative AI or LLM is all about generation of new topics or generation of new content. So what we do, we add to the existing body of knowledge our knowledge, and once we add that, it gets mixed into the existing data. There are vector chunks and all, but we'll not get into those details. And once you retrieve the information, it gets retrieved and see what you are getting. So the other guys can settle in. Just type anything. Topic for research. Mobile में भी कर सकते हो आप ये. Just type topic for research. And click. आपको तो यही आना था, डीप लर्निंग और ये सब आना, मार्केट रिसर्च, रिस्क वोलेटाइल. So based on what all you have been doing the ChatGPT or using it, they will suggest that topic. You can use your mobile phone also if there's some problem here. So different people are getting different topics. What is your topic, ma'am? Psychology, human behavior. You are from BBA. अच्छा, पर आप साइकोलॉजी में बहुत घुसे हुए हो. और आप अच्छा, ओके. So go to ChatGPT and just say something like topic for research or any topic. Sir, just say topic for research and see what all you are getting. And everybody is getting different topics. Am I correct in saying that everybody is getting different topics? And also I'm assuming that all of you predominantly except one are using a free version of ChatGPT. So now that you have seen that you are getting any topic and it is very specific to what you have been researching ChatGPT, based on its memory, it will only produce those topics, but it will give you a very generic format. And then it will ask you to prompt. वो आपसे और prompt पूछेगा कि क्या करना चाहते हो इस topic पे. Now, go to my link which Shilpi ma'am has forwarded to you in the morning. You can click any of these things. One is the direct link. It's a chatbot. The other is basically mapped to the website. Just click on that link. Just click on that link. And here, type the same thing. Any topic or topic for research. You can use your mobile if you are not able to use the desktop for some internet reasons. Just click on that link that I have given you and type the same prompt, any topic for research. आ गया आपका? And now, can you tell यहीं से कि आपको क्या topic मिल रहा है यहाँ पे? It's showing artificial intelligence in drug discovery
and development, pharmacogenomics and personalized medicine, Okay. chronic disease. ऊपर जाओ और ऊपर जाओ. Does it give you a table? It's asking me to be. नहीं ऊपर, just go to the top. On the topic related to pharmacy. It is giving topic related to pharma, but it is giving different topics. Yes, pharma. और नीचे आओ. And what is the last thing that it gives you? Just say create summary table. आपका 3 ऑप्शन दिए हैं. Say create summary table, and it will give you a summary table which says title, hypothesis, research methodology, results, gaps. Summary table, just आपको ऑप्शंस दिया ना, just say create the summary table. It is asking to select one topic. हाँ, select any topic and just ask to create summary table. मैम का आ गया. So do you see a summary table? और सबका टॉपिक अलग अलग है, but summary table is same. Summary table will tell you about the title, hypothesis, research methodology, results and gaps. Now let us understand what has happened. पहले आप लोगों ने क्या करा, आप you went to ChatGPT and all of you are free users, which is good, and you said any topic of research and it gave you a topic based on what you have been using ChatGPT for, based on its memory. ChatGPT has a memory. After that, I gave you a link which is a chatbot, and then when you type the same thing, it only gave you pharma topics, but वो भी सबका अलग अलग आया, same नहीं आया. And then when you said कि summary table, it gave you a summary table. Summary table का जो headings है, it is same for everybody. It is not different for different people. Now what has happened is, this is what we have done, which is called retrieval augmented generation, which is basically I have customized ChatGPT by adding my data onto that. Now whenever you search ChatGPT, when you can go to any search and search on, I'll tell you how to search, you will see that my generated GPT is already there on the GPT store. I have augmented ChatGPT with my knowledge and created a universal ChatGPT for everybody, which is specific to pharma. Now for that, there is one option which you people may or may not have explored till today in ChatGPT, which is called Explore. Do you see this 4 buttons here? 4 round. Have you used Explore ever? You have used? Free में आएगा. You will all get Explore. You guys have not yet used Explore. So start using Explore from now on. In Explore, you have got a lot of customized GPTs. So that means a lot of people like me, I am just a juvenile here, have actually augmented ChatGPT with their body of knowledge. So they basically created customized and specialized ChatGPTs. They have used a customized ChatGPT. So let us create one chatbot using Explore. Click on Explore. When you click on Explore, आप सबका तो ये आ रहा होगा ना, at least. It's for free also. The difference between free and paid Explore is basically how you can use RAG, Retrieval Augmented Generation, that is, add your body of knowledge to the ChatGPT body of knowledge and create a customized GPT. The free guys can only use it, which is good enough, but the paid guys can create one customized GPT. इसका मतलब क्या हुआ कि as madam had pointed out last time, at least one paid user, he creates a customized GPT for your specific subject knowledge, and that link is given to others. In fact, it's not, link is also not required. You just explore that, find out about that, and you will find out.
For example, since I am using a paid one and Rakib is also using a paid one, we can use a chatbot. We can create a chatbot very quickly. So let me create a chatbot for BBA. So I'll just go to here. First I clicked on explore. This is a customized GPT where a lot of customizations are there. That means onto the main body of ChatGPT, a lot of specialized knowledge has been added. I say create. So when I say create, you can't create. Free users can't create. You can create, no? Rakib, That you have given, we are going through that and we are getting that create also. you are getting create? Then just click on create. If you are create, go. We are able to click on that. हाँ वो फ्री में नहीं होगा क्रिएट. तो इसका नेम आता है. शिल्पी मैडम, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट कस्टम जीपीटी दैट यू वांट? Management. वो थोड़ा जनरल हो गया. Lloyd Business School BBA. Lloyd Business School is Lloyd BBA. Lloyd BBA. You want to create a very customized GPT now and you are creating it. आपका पेड होता तो आप खुद ही क्लिक क्लिक कर लेते. क्या डिस्क्राइब करोगे? क्या आप बनाना चाहते हो? वेरी स्पेशलाइज्ड जीपीटी where all your students can use. All the free users can use that. Information. Okay, see, information related attendance. Related attendance. Information related attendance will not work here because you have to link it to your attendance. ChatGPT cannot be linked to any attendance. ChatGPTs cannot be linked to any tool right now. So anything, generic thing. Notification. No, anything related to subjects and all, knowledge of subjects. Okay, so it's daily news. Can be Daily news, that's much better. Related to? entrepreneurs. Okay, related to Entrepreneurs. entrepreneurs. And entrepreneurs in India or wherever? Wherever. Any story that publish. हाँ ठीक है. And instructions, what does the GPT you want it to do? So GPT create that instruction, like story of entrepreneurs. Latest stories of entrepreneurs in AI or wherever? Wherever. In any subject? In any subjects. Okay. Collects latest stories of entrepreneurs in any subject. Conversation starters, really leave it how you start the conversation. Knowledge, now this is important. Knowledge is basically when now you are mixing the chat GPT with your body of knowledge. So you have a lot of relevant material, like for PhD research, you have a lot of PhD research article you want to upload, and that will mix with the overall chat GPT. Right now we are collecting information, so we are not adding any knowledge. And now we are saying recommended model. Use any model, web search, canvas, image generation, everything. And now I will just say create. But before create, मैं यहाँ पे जाके एक अपलोड कर सकता हूँ फोटोग्राफ. अब आपका फ़ोटो चाहिए था तो मैं क्या करता हूँ, एक जेनरिक सा फ़ोटो देखता हूँ. नहीं, आप मेरा तो नहीं डाल सकता है. लेट्स से एजेंटी की एक ब्रोशर डाल देता हूँ. दैट्स वेरी जेनरिक, दैट डजंट हैव माई फोटोग्राफ. So I put up a photograph also. So it has got uploaded. It is creating that, but मैंने कोई knowledge इसको नहीं दिया. Now it says create. Now it has already created that GPT for me, and now when I click this, two things are happening.
anyone with the link, save. It is saving, and it is also created. There's something called a GPT store. जैसा आपका Apple store होता है, Google store होता है. There's something called a Chat GPT store. It will add that GPT in that GPT store, and I will just click that, copy that, and maybe quickly create a WhatsApp group and send you that link. Luckily, I don't have to start here. You can forward this link to everyone, ma'am. Send it to me, I'll send it to the pharmacy. And I've just copied this link, and when you click that, it is like a chatbot. Share it Campus One Lloyd also. Campus One Lloyd. Because everybody can. Yeah, I can. I didn't know that. Lloyd Campus One. This one? Just click on that. I have sent you. Okay, thank you. Just click on that link, and free Chat GPT and all those doesn't matter. You'll suddenly see Lloyd BBA by Soumendra Mohanty because I created from my account. And let me say what's news. So when I just say what's news, ma'am, it will give me the daily updated news of everything, of only entrepreneurs. So this link, you can make it more specific and send this link to all the students. Create as many GPTs as you want, and they will get absolutely, or it's not, of course, you can, this is a Chat GPT 5.1, you can use it for everything. आप जैसे GPT use करते हो वैसे use करो इसको, but it will be very, very specific to this. And now go to your Chat GPT and explore में जाके, go back to log out, go to Chat GPT, go to explore and search for Lloyd BBA. That means the students don't have to remember that chatbot. It is published in the Chat GPT store under the name Lloyd BBA. इसको ChatGPT में तो करके next आपने क्या बताया? Explore. This is a very important tool called Explore in Chat GPT. Start using this Explore. आप create नहीं कर सकते. Create is just 2 steps. आपने देखा, it's so simple to create. So what I did in pharma, मेरे को 2 मिनट लगे थे pharma का. मैंने वही step लिया था. खाली उसको instructions दे दिया था कि select articles from pharma industry and put them in a table manner with the title, hypothesis. Explore में Lloyd BBA करा तो result नहीं है. Spelling यही है, LLOYD BBA. But the chatbot link is working. Chatbot link is working. So whenever your link is working, I think it will take some time. It will eventually show up in the free version also by tomorrow. But फिलहाल you can just use that link and you just say hi, और वो आपको daily का entrepreneur news देना start कर देगा. This way you can create any specific Chat GPT, customized Chat GPT. नहीं यार, ऐसा paid नहीं है. Lloyd BBA का यार वो आ गया. नहीं लिंक में वो कल तक आ जाएगा आपका. वो GPT में पब्लिश होता है. नहीं लिंक तो आएगा ही बेसिकली. लिंक विल डेफिनेटली. Explore के अंदर भी है. ये लॉयड में L कैपिटल है. नहीं, मैंने कैपिटल ही डाला. वो एक्चुअली इंजेक्शन आ रहा है सर. मैम आ रहा है. आ जाएगा. इट शुड कम. या इट शुड कम. इट शुड कम. लाइक द प्रीवियस वन, ये वाला देखो आप जब करेंगे ना तो इट शोज द प्रीवियस वन जो आपने चेक करना. Similarly, the previous chatbot which I had created, उसका मैं नाम ही भूल गया था, क्या था? Pharma Research Article Generator. Write this, Pharma Research Article Generator. That will also come. Pharma Research Article Generator. और Pharma Research Article Generator मैंने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था. I just told that instruction
just put everything, just do any pharma article and put that in a table with the columns as title, hypothesis, research methodology, results and gaps. और उसके बाद आप हाई भी लिखोगे तो वो कोई भी एक आर्टिकल पिकअप कर लेगा और उसको उसी फॉर्मेट में दे देगा. And then it will say कि you want more articles to be researched. So basically literature review takes a very long time in PhD. So you can, that format is already set now. You can make it more customized and say कि okay, research 100 articles of this topic and give me in this format. Basically PhD में होता क्या है? Title होता है, hypothesis होता है, research methodology होता है, data analysis होता है, gap, results होते हैं, gaps and limitations होता है. वो उसमें पूरा करके दे देगा. तो रफली अराउंड 2 years का जो काम होता है लिटरेचर रिव्यू वो बहुत जल्दी हो जाता है. Similar sir, research that we can also create in management. या बट यू We have to buy this ना because वो उसमें आ नहीं रहा है. हाँ तो एक पेड मैम का फ्री है उनके में आ गया सर्च में. हमने जिसका आईडी लॉगिन किया हुआ है तो नहीं मेरा तुम्हारा ही है. फ्री में आ जाना चाहिए ये. इट विल डेफिनेटली कम. ये रैक तो किया, तो अगर जैसे हम ऐसे भी करते हैं टाइम कट ऑफ है और मुझे बिल्कुल लाइव या फिर लेटेस्ट चाहिए तो उसके लिए भी मुझे It will pick up the latest only. If you type the same thing after 2 hours, it will pick up the latest news after 2 hours only. It is basically your chat GPT only. आप chat GPT तो यूज़ कर रहे हो 5.1. सर चैट करो. हम सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कुछ पेड एपीआईज होंगे उनको तो नहीं ये एक्सेस देगा, मुझे अगर वो रैक के थ्रू करना है क्या करना है आपको? पेड एपीआईज जो है ये सारा तो नहीं देगा. ये API है ही नहीं इसमें. there is no API. I understood. See, it is just doing web search now because I did not buy the tokens. Yes. My question is, अगर मुझे स्पेसिफिकली एक API को रिक्वेस्ट भेजना है, वहाँ से मेरा इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी इसमें है वो है, मगर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर That means you have to basically get the OpenAI का API, which is a paid input output tokens होते हैं. Few cents for input and few cents for output million tokens. But that's not free like Gemini. जो enterprise वही तो करते हैं. They buy the tokens और वो API को अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड कर देते हैं. So it will hit that and pick up that. So that means you are basically giving enterprise users access to the enterprise information through ChatGPT because that's a conversation that you are creating around that. But for that you are doing a paid API. Right now it is just doing a web server. We are not using paid API. So ma'am, what you can do is that create multiple such information knowledge warehouse for the students. So the students can actually get the information on a daily basis, whatever is happening. So this is just for information's sake. But let us dig slightly further and go to explore again. Explore तो आपका काम कर ही रहा है ना सबका. So you can see there are thousands and thousands of customized GPTs which are already there in Explore, which is far more powerful than your ordinary chat GPT which you are using. For example, I can use something like image generator. Just click on image generator, it will start searching all the image generators जो लोगों ने अब तक किए. तो how do people generate this, create this GPTs? मेरे जैसा नहीं है कि खाली एक इंस्ट्रक्शन दे दिया. They upload lot of knowledge. उसमें एक knowledge का भी था ना, upload knowledge. They create lot of knowledge to that and the knowledge get mixed with the chat GPT knowledge. That is called retrieval augmented generation. So when you see, are you getting all these options for image generator? Now it is just like your Google search. Pick up whichever is the maximum downloaded one. 56 million already world over लोगों ने 56 million people have already downloaded this image generator. They are using this in the custom GPT. I will not do any rocket science. I will just use that. This is created by Mr. Naif Jet Hello Taibi. And you can see that over 300,000 already done. So I can start chat. You can use custom GPT as free users. You can't create. Start chat. Yeah, start chat. Now type anything like I am typing create an image for
Lloyd Business School AI Agentic Workshop for BBA Pharma, मैं रैंडमली कर रहा हूँ ये, फैकल्टी बाय डॉक्टर सौमेंद्र मोहंती. You can create any image. You can create any image. So it will give me, ask me कि आपको क्या है. मैं इसमें मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लाऊंगा. मैं खाली इतना लिख दूंगा, make it corporate modern techie kind of image. That's it. मैंने क्या करा, 2 लाइनें लिखी और it has used that custom GPT which is created by Mr. Naif, and Mr. Naif has added lot of images to the chat GPT. नहीं, आप कुछ और कर सकते हो, मतलब you have to explore ना. तो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया और बना भी देगा. So idea is that start using Explore. आपने बना दिया क्या? अच्छा, आपने एक फोटोग्राफ भी डाला है. I should have added a photo also. हाँ, add a photo also. Create some good images. Don't depend on your digital team for this images and all nowadays. I will get to tell you something very strong on the video part also. Just add your photograph. That's why it said create a photograph. अब तो ये बनाना स्टार्ट कर दिया, but I should have added my photograph also. सो इसने ये बना दिया. अगर मैं फ़ोटो डालता तो एक फ़ोटो भी डाल देता, बट आई एम श्योर मैंने इसको ज़्यादा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे. थोड़ा देता तो और ज़रा कैची इमेज बना देता विथ फोटोग्राफ्स. जनरली पीपल हु आर यूजिंग Canva and all those, they will find it that you don't have to learn Canva, because this particular gentleman, he has used lot of features of Canva in this custom GPT. मतलब आप इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हो, थोड़ा और अच्छा इंस्ट्रक्शन दो. नहीं, आपने ये क्यों डाला? आप अपना कुछ और अपने हिसाब से बोल देते ना. कंटेंट में ऐड किया ना. नहीं, आप अपना कंटेंट डाल देते ना. जैसे मैम ने तो अपने ही डाला होगा कुछ. एंटरप्रेन्योर के बना रही हूं. आप थोड़े एंटरप्रेन्योर फोकस हो गए हो. थैंक यू सर. सर जस्ट वांटेड टू आस्क, जैसे भी हमने ये क्रिएट करा आपका डेली न्यूज़ ऑन एंटरप्रेन्योर, तो जब एजेंटिक एआई दैट वी आर यूजिंग, सो कैन वी कनेक्ट दैट, मतलब विदाउट यूजिंग एनीथिंग एवरी डे स्टूडेंट विल रिसीव दैट नोटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एजेंटिक एआई? Yes. That's a very good question, which madam is asking. Ki she has created one. How will the student get a daily notification of what is happening? If you are using the custom GPT, of Chat GPT for creating this, then you have to buy that tokens जो हमने Gemini में free ले लिया था, API tokens. Here also the token will be there. It will give you the tokens, but that is a paid token. It will charge you on the traffic of how many bytes are going out and going in. So that is the actual source of revenue for Chat GPT. You know how Chat GPT makes money by the time? Any idea? That's exactly how it makes money. Chat GPT doesn't make money on $20 subscription revenue. That is not the amount. That's very chiller amount for them. They make money by the tokens. Now, if I use Gemini type ka token, I can buy Chat GPT token and link to one of my servers, and students use Chat GPT to get to that server information. So every time the traffic is going in and out of Chat GPT, they will charge me for bytes, which is called input tokens and output tokens. So the model of all these LLMs worldwide, whether Gemini or Chat GPT or Claude, they want to become the global telecom carriers of data. Telecom provider Vodafone और Airtel आपको minutes में charge कर रहा है, data का charge कर रहा है giga. They also want to charge the enterprise. And को use नहीं करता है, and subscription model unlimited का. But I'll tell you one more tool where you can integrate, where students will get notification. Actually इसमें आप अपना photographs डालते तो better रहता. Similarly, go to Explore again and just पहले ही आ रहा है ये वीडियो जनरेटर बाय इनविडो ही आ रहा है.
ये भी बड़ा हेवीली डाउनलोडेड है. आर यू गेटिंग दिस वीडियो बाय AI by InVideo? Yes, sir. Now upload your photograph and create video and create a 15-second YouTube shorts. I'll tell you how to do it. First of all, मैं अपना एक फोटो डालता हूँ इसमें. Add photos. I have added a photo and create a video for AI. आप अपना कुछ और लिखो. Workshop for Lloyd Business School Pharma BBA faculty by Dr. At least you'll remember my name. इतना टाइप कर चुका हूँ. क्रिएट करा वीडियो आपने? करो एक वीडियो. It's not working, so मोबाइल यूज़ कर लो, डेटा यूज़ करो अपना. सो अगेन इट विल टेल मी किस टाइप का वीडियो है. मैं इसमें अगेन आई विल नॉट यूज़ मच टाइम, बट आप कर सकते हो. फास्ट फेस एनर्जेटिक 40-50 सेकेंड्स. मैं कर ऑप्शन 2 फास्ट पेस्ट. ये एक्चुअली आपको एक यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो जनरेट करके दे देगा बड़ी जल्दी. इसने मेरे को स्क्रिप्ट दे दिया. दिस इज द स्क्रिप्ट इट इज गिवन. इफ आई एम I'll say okay, otherwise I'll say change it. Confirm. can we edit this? Yeah, of course, you say कि I'm not happy, edit it. और upload your script. जैसे आपने अपलोड फोटो किया, आप अपना स्क्रिप्ट भी ऐड करो. मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता ना बेसिकली. That's what we have become. We are not using our mind at all. We are using AI to do everything. Yeah, he's leading us down. Yeah. आप अपना स्क्रिप्ट अपलोड करो. Have you guys reached till this point? So it is using one of the custom GPTs. और उसने बना दिया मेरा. Process start हो गया, but it will take some time. Video takes time. You can see here. Click here to watch. And now I have to add one account. That's all. Gmail से. So it is creating one. और ये अच्छा वीडियो बना देगा. इसके बाद in the next class I will give you one more free very good video editor. Absolutely free. So it is analyzing the script because वीडियो बनाने में लोग 5-6 दिन लगा देते हैं. ये तो आपका आधा घंटे में बना के दे देगा 20 मिनट्स में. What is the use case study? You people are using lot of Instagram and social media for your achievements, your students' achievements. For that you have to use a digital agency or in-house people who are making this video and images. They may take long time, so you can just use the AI. It will use the same Canva and all, and it will be free. Use the Chat GPT, custom GPTs. Custom GPTs में just use image generator and video generator, and it will create a video, very powerful video and a very good image. Just use the script, whatever you want to use. Give whatever you want to give the instruction, and it will start generating. So it has analyzed the content and it is processing. We'll obviously let it run in the background. It will take 20 minutes to generate the video. So it will generate the video. हाँ, आपका अगर वो पूछ रहा है ना इन वीडियो का, तो मेक इट 15 सेकेंड्स यूट्यूब. हाँ, इसमें आप कुछ भी डालो, ये एंगेजमेंट 2. और वो वाला ऑप्शन यूज़ करना जहाँ एक क्रेडिट यूज़ हो रहा है.
मैंने अभी एक रिसर्च का टॉपिक डाला, एक डायग्राम क्रिएट किया, इसमें सारा स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया। जस्ट सी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइलिन एंड व्हाट ही प्रोड्यूस, इरिडियम बना दिया। कौन सा वाला आपने यूज़ किया? अरे सर, जो आपने इमेज जनरेटर, हाँ, अच्छा, इमेज जनरेटर। मैं आपने कहा था ना कुछ अपना करिए, तो इमेज जनरेटर में आप उसको एक सजेस्टेड इमेज अपलोड करो एंड देन से कि नेम डाल दिया था, जैसे टेक्निकल नेम मिथाइलिन। तो जो है इसने ये किया, इसने सब गलत बना दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिथाइलिन ब्लू का स्ट्रक्चर ये, अगर स्टूडेंट को ये पता चल जाए तो पूरा ही केमिस्ट्री गलत हो जाएगा। So what you have to do, ma'am, in that case, need not you have to search more image generators. Need not be this, because आपका पॉइंट का एक वैलिड आंसर मैं देता हूँ. Every chat GPT or every LLM is trained on a particular specific data. Image generator is basically trained on generating brochures and all. But you have to search for an image generator which is trained on chemistry formula images. आप उसको एक्सप्लोर में देखो, इमेजेस ऑफ केमिस्ट्री फार्मूला, अगर किसने बनाया होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं बनाया तो आप बनाओ. तो अपलोड लॉट ऑफ दिस इमेजेस ऑन द नॉलेज एंड इट विल स्टार्ट लर्निंग, इट विल लर्न. क्योंकि अभी तक कोई यूज केस आया नहीं तो किसने बनाया नहीं इसको. सी सर्च फॉर अदर इमेज जनरेटर, सर्च बाय द सर्च नेम एक्सप्लोर में, गिव एनी सर्च नेम, इमेजेस ऑफ केमिस्ट्री फार्मूला, जनरेट इमेजेस ऑफ केमिस्ट्री salt or whatever formula. So now this is important. It shows कि आपको चाहिए क्या. यहाँ तक आ गए आप. So it said generate 14 credits. I don't want 14 credits because it will start asking me money. I will just say basic. I will just say basic. So it says generate 1 credit. This is free. LinkedIn, maybe I'll say YouTube Shorts. 40 सेकेंड्स का मेरा वीडियो बनेगा YouTube के लिए, YouTube Shorts. Basic uses existing body of knowledge, not very professional, but it will be reasonable, and generate 1 credit. It will use 1 credit which is free. Generate 1 credit. Continue with free basic. Continue with basic free and continue. एंड इसको आप छोड़ दो, इस पर मत देखो, 15 मिनट बाद ये आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यूज द, जैसे स्टार्टेड 5% ना, ये कंप्लीट कर देगा पूरा. क्लिक ऑन फ्री एंड सी दैट इट यूजेस ओनली 1 क्रेडिट. एंड यू कैन यूज फॉर क्लिक ऑन लिंक्डइन और यूट्यूब, तो अप्रोप्रिएटली लिंक्डइन का बनाएगा, यूट्यूब का बनाएगा. क्रिएट कर रहा है, आपका परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे, बन जाएगा मैडम. जस्ट हैव पेशेंस. जनरल टॉपिक है ना. अब जैसे सपोज हमारे इवेंट्स हो गए, कुछ हो गए, उससे रिलेटेड अगर हमको क्रिएट, नो आपने तो इसको कोई अपलोड ही नहीं किया फाइल. जो भी आपका वो प्रोडक्ट है, आपको फोटोग्राफ अपलोड कर दो, वो उसी का वीडियो बनाएगा. तो कुछ कैप्शन, जैसे मैंने तो अपना फोटोग्राफ अपलोड किया है, अब जो भी वीडियो बनेगा ये मेरे फोटो के आसपास ही आएगा. हाँ, कुछ ना कुछ कोई डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करो एंड इट विल जनरेट ऑन दैट. आपने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया इसको. मतलब इट कैन टेक मल्टीपल फोटोज ना. मल्टीपल फोटोज ऑब्वियसली, जैसे चैट जीपीटी ना, इट यू आर यूजिंग चैट जीपीटी ओनली. आप चैट जीपीटी तो यूज कर रहे हो. सो इज एवरीबॉडीज वीडियोज स्टार्टेड जनरेटिंग, बट आई होप यू हैव क्रिएटेड समथिंग टेंजिबल, तो आपके यूजफुल आ सके, जो आप आज लिंक्डइन में अपलोड कर सको या यूट्यूब में अपलोड कर सको. तो स्टार्ट जनरेटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड मेक योरसेल्फ विजिबल एंड पॉपुलर फॉर द आउटसाइड मार्केट. In fact, your students can do it, ma'am. Your entrepreneur students, they can, for their entrepreneurial ideas, they can create videos and upload it. It's free users. All that they have to use is basically the explore option and your specific input about chemistry formula, because that image generator is not trained on specific complex structures of science and all. You have to search for one. चेंज फॉर एग्जांपल ये सीधे मैं देख रहा था, चैट जीपीटी का अपना डिफ्यूजन मॉडल्स पे चलता है. तो अब डेली कर रहा है ना ये वाला, डेली यूज़ कर रहा है मेरे ख्याल से ये. यस सर.
तो अपना जेमिनाई पे सर आप देखें इमेजिन मॉडल यूज करते हो दैट आर फार No, ChatGPT is not using it. This particular guy in video. इसकी बात नहीं कर रहे इमेज जनरेशन की बात हाँ वो अलग अलग कर रहे हैं. मगर जो अब जेमिनाई इसमें करंटली यूज के इमेजिन मॉडल गूगल के वो ज़्यादा अच्छा इमेज जनरेट करता है डिफ्यूजन या फिर आपके गैर मॉडल्स. That is what Sundar Pichai said. That's what Sundar Pichai claimed, and that is what is your observation. But आपका ऑब्जर्वेशन तो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरह है ना कि लोग उसको बिलीव नहीं करेंगे. पीपल बिलीव इन क्वांटिटेटिव रिसर्च नॉट क्वालिटेटिव. वो तो आपका पर्सनल बायस है. दैट्स योर पर्सनल बायस. सो इफ यू आर ओके वी कैन मूव ऑन. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल. ये तो बड़ा आपको पता ही चल गया कैसा यूजफुल है आपके लिए. AI क्रिएटेड कंटेंट पर YouTube जो है वो मतलब एक मिनट चैनल को आपने मोनेटाइज बेसिक करके इसको जनरेट कर दो. जस्ट टू जनरेट. अब उसको काम करने दो ना पीछे. द एजेंट इज वर्किंग फॉर यू. इज इट ट्रू कि YouTube जो है AI क्रिएटेड कंटेंट पर जो है चैनल को मोनेटाइज करता है. यूट्यूब AI जनरेटेड कंटेंट को मोनेटाइज करता है. 100% करता है. आपका बन भी गया. आपका फोटो कहाँ है इसमें. तो फिर फायदा क्या है. नो 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 यूट्यूब विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन AI जनरेटेड एंड नॉन AI जनरेटेड. बट आई एम नॉट 100% श्योर ऑफ इट. अगर ऐसा होता तो सारे ही जनरेट कर लेते. यूट्यूब इटसेल्फ वर्क्स ऑन AI एल्गोरिथम, so it will definitely catch. It should. Otherwise everybody will cross that threshold of 4,000 hours and the earnings will start. In fact, there's a very different earning mechanism which is being used these days, which is basically this channels, this regional channels, Hindi channels and regional channels. जैसे मेरा एक पॉडकास्ट करते हैं ये 45 मिनट्स का. मैंने एक मैम को दिया था पॉडकास्ट रीजनल लैंग्वेज में. परसों ही किया था, लास्ट वीक मंडे को. टिपिकली उसका जो व्यूअर टाइम होता है ना दैट इज़ अराउंड 20 मिनट्स. लोग यही का ज्ञान सब जानना चाहते हैं. अब उसको होते हैं टिपिकली 1000 व्यूज़. बड़े आराम से हो जाते हैं. एंड हर 3 व्यू का मतलब 1 घंटे का व्यूअरशिप हो गया. हर 3 व्यू में तो आपका ऑलमोस्ट 300 आवर्स का व्यू हो जाता है एक छोटा सा वीडियो. और 300 व्यूज़ का यूट्यूब का अर्निंग, 300 आवर्स का यूट्यूब का अर्निंग होता है टिपिकली रफली अराउंड $500 विच इज़ 40,000 प्लस. तो वो मेरे को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में, एक इंटरव्यू लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, बोलते हैं मिनिमम सर आधे घंटा 45 मिनट से करो और 40-50 हज़ार उनका अर्निंग हो जाती है बड़ी ईजिली. सो ऑल द चैनल गाइज आर नाउ लुकिंग एट दोज कंटेंट जो पीपल आर looking for a longer period of time. So that is what they are basically trying to look at it. जैसे मैं आपको भेजा था एक, आपको मैंने उड़िया लैंग्वेज का अपना इंटरव्यू भेजा था. दैट इज़ बेसिकली AI हैज़ नो बाउंड्रीज. अगर आप इनको फॉरवर्ड कर दो तो ये भी एवरेज अभी नहीं, बट आई एम श्योर द 5 मिनट तो देखोगे ही देखोगे. दो इट्स इन प्योर उड़िया लैंग्वेज. पर इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 10,000 व्यूज़ इन फेसबुक और यूट्यूब में तो इट विल क्रॉस 1000 टुडे. Remember, every average viewing is 20 minutes, so every 3 views is consuming 1 hour of seeing time. तो 1000 views में आपका कितने hours हो जाएंगे. और typically इसका $500 आ जाता है. So now all this channel guys वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि सर प्लीज़ आ जाओ यूट्यूब स्टूडियो में, ये कर दो वो कर दो. बट दे डोंट शेयर द रेवेन्यू तो उनका है, बिकॉज फॉर देम इट इज़ फ्री कंटेंट. सो AI के वर्ल्ड में ना एवरीबडी इज लुकिंग एट डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स. एवरीबडी इज लुकिंग एट डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स बिकॉज 1929-30 में जब गोल्ड रश हुआ था कैलिफोर्निया में, यू नो द गोल्ड रश इन अमेरिका ना, फेमस गोल्ड रश, कैलिफोर्निया माउंटेन्स में ना गोल्ड निकला था. तो एवरीबडी वॉज रशिंग देयर टू डिग गोल्ड, पर किसी को मिला नहीं. वो फेमस ग्रेगरी पेक की मैकेनास गोल्ड, तो उसी पे ही फिल्म हुआ था. देयर वॉज गोल्ड, बट यू नो हु आर द गाइज हु एक्चुअली मेड लॉट ऑफ मनी इन दैट टाइम? The people who are making jeans, pixels, shovels, कुल्हाड़ी, खोदने का सामान और जीन्स, क्योंकि उसको पहन के ही लोग गोल्ड डिग करते हैं, उनका बेसिकली बिक्री बहुत हो रहा था. दे आर द रियल पीपल हु मेड मनी, बट पीपल हु सर्च फॉर गोल्ड दे डिड नॉट मेक मनी. ये इसने बना दिया.
is changing the game. And Lloyd Business School is staying ahead of the curve. Meet Dr. Samendra Mohanty, a pioneer in AI for education. In a power-packed workshop, he's guiding pharma and BBA faculty through the world of agentic AI, where educators don't just use AI, they lead with it. Future-ready tools, hands-on strategies, real transformation. Faculty, it's time to level up. The future of teaching starts now at Lloyd. So it's a 30 seconds. I could have made it more customized. Like I said, use my photograph and all, and it will start using that. And it will create a very powerful where my photograph is doing the speaking part. And I'll upload it on YouTube. Of course, it may not monetize, but it is not all the purpose is not always to monetize. So I guess most of you by now have understood this first useful tool. Basically क्या है ना, एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा. चैट जीपीटी हम सबके पास है, पर इसमें एक बड़ा पावरफुल ऑप्शन है एक्सप्लोर. वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट एक्सप्लोर. एक्सप्लोर में लॉट ऑफ दिस लाइक ए एप्पल स्टोर, इट्स लाइक ए गूगल स्टोर. सो यू मेक योर सेल्फ विजिबल बाई क्रिएटिंग योर ओन जीपीटी, कस्टम जीपीटी, और अपने नाम से पब्लिश करते रहो और लोग उसको यूज़ करने लग जाएंगे. Like I plan to make it more customized for this literature review for PhD researcher. उनको कुछ करना ही नहीं, एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ूंगा, उसका पूरा का पूरा लिटरेचर रिव्यू से लेकर सब कुछ कर देगा. जनरेटिंग रिसर्च आर्टिकल्स, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ फाइन ट्यूनिंग टू बीट दैट AI detector part. Okay, let me use the second tool, which is relevance.ai. relevance.ai. So you can just quickly do a sign up and you will get 1000 free credits. It will give you a very good idea. Excuse me, आप IT टीम से? नहीं, आप क्यों बुलाओगे? Is there any reference model in this? Reference sharing. इसमें होता है ना, साइन अप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किए तो उसको 100 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिले. हाँ बिल्कुल होता है. आप तो इसमें अपना वो रेफरल मार्केटिंग के मूड में आ गए पूरा, और कोई खरीदेगा नहीं इसको. नहीं, it's just like 100% इट इज देयर. मैडम एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आपसे. मैडम, सो नाउ यू विल सी हाउ द एक्चुअल एजेंट्स वर्क. Relevance AI will give you 1000 credits free. Has everybody done a free sign up on Relevance AI? And come to this page where it says new agent. Where it says new agent. Is everybody on this page, new agent? Is everybody on this page where you have this plus sign for new agent? इसको क्लोज करो जरा. इसको क्लोज कर दो. इसको भी बैक कर दो. इसको पूरा उसमें आ जाओ. बेसिकली यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे होम पे आ जाओ, यहाँ पे होम पे आ जाओ. नहीं, जस्ट यहाँ पे आपका, अच्छा आप ऑलरेडी यहाँ पे आ गए. यहाँ पे होम पे जाओ और इसको कैंसिल कर दो पूरा, और आपका आ जाएगा अनटाइट. इसको क्लिक करो जरा. आपने कुछ और की, एक मिनट नॉलेज ट्रिगर्स आपने सेव कर दिया था ना इसको? आपने कर दिया था. जस्ट क्लिक अगेन.
दोबारा लॉग इन करो रेलेवेंस AI में, जस्ट लॉग इन अगेन. You should be on this page which says agent, new agent, or just click on somewhere called agent. यहाँ पे आ गया ना आपका, यहाँ पे एक एजेंट आ रहा होगा वर्क फोर्स में, मार्केट प्लेस एजेंट, यहाँ पे टूल्स वर्क फोर्स, यहाँ पे एक एजेंट आ रहा होगा ना, यहाँ पे you'll see some agent here, आ रहा है? हाँ लॉग इन, यू टू ऑब्वियसली लॉग इन, यू टू लॉग इन. नहीं वो बैकएंड में होता रहेगा, आप एक और टैब में आ जाओगे ना. सर चैट एक्टिव हो गया उसमें, हमने लॉगिन करके यहाँ तक आ गए. हाँ ये प्रोसेस कर दिया लॉगिन. दोबारा आपने एक नाम जीमेल से लॉगिन कर दिया अपना, लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. लॉग आउट अब फिर से लॉग इन करो. यू शुड कम टू दिस पेज विच सेज अ न्यू एजेंट, जैसा आपका आ गया. एग्जैक्टली, हाउ डिड यू गेट इट? Sir, I checked it. How did you get it, ma'am? Sir, something was there. I clicked on that. Basically, what you did, you clicked on this thing, ना? यहाँ पे क्लिक किया होगा ना आपने? Yes. यहाँ पे क्लिक किया था ना? मैम, मोहिनी मैम ना, Yes, sir. एक बार देख लो कि कहाँ पे वो, बिकॉज मैं इतना इसमें अंदर घुस चुका, मेरे को बेसिक सब पता ही नहीं कैसा स्टार्ट किया होता. I'll just take a minute and come. You guys got new agent now? So this is how the real agentic framework works. आपको अब पिक्टोरियली पता चलेगा. Just click on new agent. और इसमें it will tell you built with Invent. Invent is the concept of agentic AI framework here. It's an Australian company, Relevance AI. Purely look and feel पे built हुआ है. कोई coding नहीं है इसमें. Zero coding. It's a no code. Are you getting this kind of framework? तो मैं खाली इतना लिखूँगा इसमें. Lead generator. There are some PPTs which some tools which are good in very specific ones. Relevance AI is extremely good in lead generation, which is a very powerful thing जो manually करते हैं. Ashutosh, that's the most difficult part. It will done automatically. Whereas N10 is very good in lead capture. हमने lead capture का workflow बनाया नहीं अभी तक. How it captures the lead on your CRM and Google Sheets. It can also do it. I'll just say lead generation and start. So you see here what is happening. It is analyzing my message कि मैंने क्या करने की कोशिश करी, and यहाँ पे waiting for your response. What type of leads you want to generate? Sales, recruitment, real estate. I'll just say simply sales, just to make it very specific. Sales leads. और आप देखो कि यहाँ पे एक बंदा उछल कूद कर रहा है. That guy is your agent who is working for you. Which platform or source? All. I want to do generation of sales leads. So the agent is working. He has got a bedroom and a computer. He is an agent and he'll start working for you now. जब तक ये कुछ उछल कूद कर रहा है तब तक हम इसका नाम चेंज कर देते हैं. अनटाइटल्ड है. इसका मैं लिख देता हूँ HR एजेंट. इसको ऐसे बैक करके
HR agent and save agent. So it will be saving under that name. I just untitled को मैंने एक नाम दे दिया. So it is sharing all this information with this agent. And now don't do anything. The agent has understood आप करना क्या चाहते हो. It has understood that you are getting a lead, creating a lead generation activity. You are generating sales leads. So it will give you lot of options कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ खुद ही कर देगा. तो don't click on all the three, just click on once, accept. Just one time accept, not all the 3 pages. And this is what the agent new name is, Genesis, the lead generator. हमेशा एक नया नेम बन जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए. Has everybody reached this topic? ये बड़ा look and feel है, इसमें कोई कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं होता. It's simpler than orange also. एक बार accept कर लो इसको रकीब. Are we all at this page where we have done one time accept? Now if you just take the cursor here, don't click anything. यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो tools, ये क्या है दूसरा? Knowledge. So अब तक you have understood, there is one LLM, there is one tools, there is one knowledge. Knowledge हम upload करते नहीं, हमारे पास ज़्यादा PDFs है नहीं अभी. And by default, this agentic framework uses OpenAI, ChatGPT as LLM. It is using ChatGPT. So once you have done this, I will just click on tools and you will come to this page. Just click on add tool. Add tool. When you look at add tool, it will give you all these tools that are there for lead generation. It will do the Google search for you, extract and summarize, send email from this platform itself, and link it to the LinkedIn profile also, extract from LinkedIn. It uses very good scraper tool to do all these things. So I will start clicking all these things randomly, not randomly. Just see what all I am using. I am using for lead generation, Google search I want. So it says one tool has been added. Extract and summarize web content, I want that. And this is the most powerful one. Google search, scrape and summarize. So search karega, scrape is scraping the websites. Send email via Gmail. I'll send the email from this platform itself. Click this also, email from Gmail. LinkedIn, of course. PDF I don't want, Google search I want. And that's it, 6 tools. Rapid also I'll use. LinkedIn I'll use both the things. Rapid API so that it can search the LinkedIn profile and extract and summarize LinkedIn profile. Total 7 tools. Are you on this page where it says add 7 tools? Then just click on add 7 tools. LinkedIn वगैरह, मतलब खाली वो नोट वाला छोड़ दो. And it will give you a prompt which says send email via Gmail. आ रहा है आपका prompt एक? Now this is very powerful. So you need to connect. अब आ गया? आपका आया या send email via Gmail? आ गया? Has anybody you got it? Just click on this and मैं तो already added हूँ. Add any Gmail tool. Click on that. वो आपका यहीं से भेज देगा. Add any Gmail tool, any Gmail ID जिससे आप मेल भेजना चाहते हो, उसी को ऐड कर दो आप.
अगर ये अभी नहीं हो रहा तो लीव इट, डजंट मैटर, वील डू इट व्हेन द टाइम कम्स टू सेंड ईमेल. ये हो क्या रहा है इसमें? ओके, नाउ फॉरगेट दैट जीमेल अगर आपका नहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम जीमेल. फ्रॉम जीमेल, ये मैं इसके नीचे जा नहीं रहा स्क्रीन का. फ्रॉम जीमेल में ऐड द जीमेल इफ यू कैन ऐड नाउ, अदरवाइज इट कैन बी एडेड लेटर ऑन. जैसा आपका आ गया ना, जस्ट ऑथेंटिकेट एनी जीमेल आईडी, कोई भी एक जीमेल आईडी ऑथेंटिकेट करो, ऑटोमेटिकली वहाँ से जीमेल चला जाएगा, जैसे राकीब ने कर लिया. नाउ देयर इज अ थर्ड ऑप्शन विच इज कॉल्ड नॉलेज. When you click knowledge, it will ask you to upload the PDF. This knowledge is all about retrieval augmented generation. On the LLM, it is adding your body of knowledge. So I am just doing lead generation, which is usually Google scraping and searching. So I'm not doing that. Now I will start the agent to start the work. So there is a button here called run. जब run करोगे तो अब आपको बोलेगा कि आप क्या काम कराना चाहते हो. So this is what I wanted to do. Please. I did not even write please provide. मैं CTLD में हूँ of 3. I am saying only 3. I can say 10, 20, 30, but it will consume my 1000 credits. मेरा तो खैर paid account है. So 3 मतलब every time it is doing something, it is using. Now this is a tool which is using at the back end. Every agentic AI framework will use a tool. LLM एक यूज़ होता है. The default LLM that it uses is ChatGPT, OpenAI, and the way it uses your APIs, जैसे हम करते थे वहाँ पे Gemini का. API is charged in LLMs, in ChatGPT. They charge per input output token. कितना आप उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कितना वो तुमको डेटा भेज रहा है ChatGPT. So it is charged few cents for millions of tokens. Token is a word. So I can get more 3K, I can get 100 CEOs detail, but it will use that much credits. So I'm just using just 3 CEOs just to show you of mid-size. This is a, ये अपने आप क्यों ऐसा हो रहा है? Of mid-size IT companies in Delhi, Noida, Gurgaon in India. Please provide email and please provide नेम, ईमेल, यही तो आप चाहते हैं, फ़ोन नंबर्स, एंड मेक इट रन. Click. So you can see that your HR agent is working now at the back end using the tools that you have given him. And यहाँ इसने देखो काम करना स्टार्ट कर दिया. It is using enable powerful scraper और बैकग्राउंड में ये पहला उसने सर्च कर रहा है. मैंने सिर्फ उसको 3 दिए हैं काम, 3 CEOs का नाम के लिए बोला है, मिड साइज IT कंपनीज. The agent has started working. I hope it give some other this thing. और आप कुछ और दे सकते थे. So this is basically I am assuming that I am the CTLD of Lloyd Business School
and instead of one person manually doing it for recruitment of our students, I have put an agent to work. आप सबका एजेंट काम कर रहा है, अलग अलग प्रॉम्प्ट दिया ना आपने, सेम तो नहीं दिया ना? You could have given any prompt. Please select 5 HR heads. Sometimes it gives, sometimes it not gives. आपका आ गया? Mostly it gives. आ गया? क्या है दिखाओ. ओके. अब देखो इसका क्या है. ये एक्चुअली राकीब जस्ट स्क्रॉल अप, आपको थोड़ा पीसी अलग टाइप का है. सो मैंने 2 दिए थे. कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, योगेंद्र कश्यप. और सी व्हाट इट हैज डन, इट इज बेसिकली आपका, in fact you can give one more this thing. Please give me the email ID or phone numbers if it is possible. It will give you everything. सो वैसे फ़ोन नंबर बोला था. So you can give a prompt. Please provide 2 more with email ID and phone numbers. Please provide me 2 more names with email ID and phone numbers. It will give you exactly the same. जहाँ इसको जहाँ अवेलेबल होगा ये ढूंढेगा. It will go to LinkedIn. Scrapping LinkedIn is very difficult, but their APIs will do it. It will scrap all the web pages, it will scrap all the LinkedIn, and it will provide. So again his agent is working. कईयों आप लोगों का आया? नेम, लोकेशन, CEO नेम, ईमेल आईडी, फोन. आपने फ़ोन नंबर बोला, मैंने कमांड दे दिया. Wow. फ़ोन नंबर भी ऐड आ गया. You should all come and look at his list. It's amazing the way his agent has worked. आप आइए जरा देखिए इनका. Because I can't put that thing on the screen. CEO नेम, ईमेल आईडी सेंड बोला. Working different with different. Yeah, it'll because. सर ने लास्ट कमांड बोला ऐड फोन नंबर आल्सो. एक आपका प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट क्या है? ऊपर करना सर. ऊपर क्या है? नहीं सर, प्रॉम्प्ट तो वो नॉर्मल है, मगर प्लीज प्रोवाइड ईमेल एंड CEO's नेम ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज इन गुड़गांव. अपना प्रॉम्प्ट है तो आप. सो यू गाइस हैव, द एजेंट हैज एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ लीड जनरेशन. नाउ come to my next prompt which I am giving, and the next prompt is basically बड़ा simple सा prompt है. Please write an introductory mail about Lloyd Business School offering campus placements for BBA students. अब मैं इसको ना ऐसे थोड़ा सा स्पेसिफिक करूँगा. अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ ना, ये ऑटोमेटिकली मेरे जीमेल से ना यहीं से उन सबको मेल भेज देगा जिन जिन को इसने ऊपर सर्च किया है. इट विल क्रिएट अ ड्राफ्ट मेल एंड सेंड इट ऑटोमेटिकली. बट आई डोंट वांट मेल टू गो टू दोज पीपल जिसको ने सर्च किया है. आप चाहो तो भेज सकते हो. आप HR रोल में रिज्यूमे भेज सकते हैं अभी. एंड सेंड मेल यूजिंग माई जीमेल टू, मैं अपने आप को ही भेज रहा हूँ, gmail.com एंड CC. मैडम आपका नाम क्या है? आपका मेल ID क्या है? शिल्पी? नहीं, वो जो भी लॉयड का है, शिल्पी. @Lloyd Business, Lloyd
बिजनेस 3 ऐसे ना .edu. ये ठीक है 3 ऐसे. तो अदरवाइज व्हाट इट डन, वॉट एवर वी हैव सर्च्ड इन द इनिशियल दिस थिंग, जो भी इसने लिस्ट बनाई है ये सबको मेल भेज देगा यहीं से. एंड आई विल से एंड नाउ इट विल गिव मी दिस प्रॉम्प्ट कि किस जीमेल से आप भेजना चाहते हो. तो लेट मी सिलेक्ट माई, यहीं से मैं आपके सामने करता हूँ. लेट मी यूज़ लॉयड बिजनेस वाला ही. एंड किस नाम से भेजना चाहते हो, मैं लिख दूँगा डॉक्टर जस्ट मोहंती. सी फ्रॉम दिस स्क्रीन itself I will be sending directly using my Lloyd Business School email ID and it will go to Shilpi ma'am. Continue. It is already creating a draft. Ma'am, check your mail ID. मेल आ गया आपको? मैंने अपने आप को भी सीसी मार्क किया है. ये देखो, आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस मेल जस्ट नाउ फ्रॉम डॉक्टर मोहंती, कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी BBA स्टूडेंट्स. उसने एक मेल मेरे को भेज दिया. आ गया मैम आपको? आप लोगों ने मेल भेजा? You can send a mail to anybody. You can ask the draft to be sent. अरे यार, आप इतनी मेहनत क्यों? आया होगा स्पैम में, देखो, क्योंकि आपका लॉयड वाला वो है ना. हाँ, वो लॉयड का डोमेन का कुछ होगा. आप अपना स्पैम में देखो. स्पैम ट्रैश कहीं तो आया होगा. हाँ, shilpi.sarna@lloydbusinessschool.edu.in. Maybe it will only get sent to Gmail because of some policies. But आप लोगों ने मेल भेजा क्या? हाँ, तो बट यू कैन सर ना कि सेंड द अबव मेल टू योरसेल्फ ही भेज दो, किसी और को सीसी कर दो. हाँ, दिस द ड्राफ्ट. आप उसमें लिखो कि प्लीज सेंड अ. तो अपना मेल चेक करो. अच्छा, अभी मेल चेक करना है क्योंकि मैं देख. पर उससे आपने जीमेल कॉन्फ़िगर हो गया था आपका? नहीं, आपका जीमेल आपने कॉन्फ़िगर किया था? नहीं, कॉन्फ़िगर तो. हाँ, तो वो नहीं किया. वो आप लोगों ने अपना जीमेल कॉन्फ़िगर कर दिया था? इसमें आ गया था ऑप्शन? अगर आ गया तो उसमें फिर वो मेल भेज देगा वो. सर उस टाइम पे नहीं मिले तब भी यहाँ पर ऑप्शन वो देगा. तभी मैंने बोला था कि डोंट बॉदर, इट विल गिव यू द ऑप्शन नाउ. सेंड. मैडम, आपका जीमेल कौन सा एड्रेस? shilpi.sarna1 lucky to get such a good shot. So when you do that, आलम सर, जब आपने ये बोला ना, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज सेंड द अबव मेल टू समबडी, इट शुड गिव यू दिस ऑप्शन. आप डालो ये वाला प्रॉम्प्ट. अब यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ये वाला ऑप्शन तो पड़ेगा टूल में, अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ. आपने सिलेक्ट किया था इसको जीमेल टू ईमेल टूल्स में. एंड नाउ आई कैन यूज एनी अकाउंट हेयर. आई एम यूजिंग द अकाउंट लॉयड वाला ही, और मे बी आई कैन यूज माई एक्सटिंग दिस थिंग, राइट, डॉक्टर मोहंती. नाउ चेक करो मैडम, शिल्पी मैम.
आ गया Gmail. So what the agent has done, it has actually done all the search for you, found out the phone numbers, email IDs, individual contacts, scraping the wall. The firewalls of LinkedIn are very, very difficult to crack, but it has done it. It has already done that. It can scrap the entire websites. It can scrap the LinkedIn. It will get you all the details. Very good for lead generation, and it will send the mail. Now check your credits. How much credits are there? ऊपर आ रहा होगा. सेव कर लेता हूँ. How much credits are there? ये नीचे आ रहा होगा यहाँ पे. अभी भी 1000 है. आपने यूज़ नहीं किया क्या अभी तक कुछ भी? हाँ, it will not use credit for everything, but mail होता तो आपका credit यूज़ हो जाता हो. So madam, how does it work in the real world case? इसका कैसा होता है? I am a digital marketing guy and I want to basically search email IDs, phone numbers of all whichever digital marketing agency owners or college owners or university owners or HR heads or whatever. I will give that prompt to this agent, and also I'll give it a prompt to do at least 100 searches every day and send an introductory email to those 100 search items and give a summary to my email ID what you have done every day, and do it for next 30 days. उसके बाद आई लॉग आउट ऑफ दिस रेलेवेंस AI एंड मेरे को रोज़ वो अपना बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, मेल जाता रहेगा लोगों को, और मेरे को समराइज रिपोर्ट मिलता रहेगा. इट कंज्यूम्स फ्यू क्रेडिट्स. In fact, if you want to, right now it is giving you 1000 credits because of that OpenAI token numbers and also Gmail and all, because it is using traffic. But it will cost around 1600 rupees, 1650 for 10,000 credits. So I generally calculated once, cost of one lead generation and sending a mail automatically to that lead costs around let's say 32 paisa. 32 paisa mein it will generate a lead and send an introductory mail. So vis-a-vis you can actually find out what is the salary cost of people who are actually doing it manually, and you can actually set a target for this agent ki do 100 lead searches every day and send the introductory mail. So this is also called, this is not a single agent, it's a multi-agent framework. You can create, in the same work you can create multiple agents. So the first agent creates the mail and sends it. The second agent actually checks your input inbox for the incoming replies and then checks whether it's a positive sentiment or negative sentiment. Each mail can be categorized into a number between -1 and +1 based on the words that have been used. There are, let's say, 2,20,000, 16,000 words in English language. There's a dictionary called Vedar. It uses 7,500 most popular words, and it has given a score between +-4. Like love is 4, hate is -4. So based on the response mail that you get, it finds out whether it's a positive mail or a negative mail. And if the score is, let's say, 1 to 4, it will again send another mail. Can I set up a web meeting between this time between you and us? And again, when it gets the affirmative reply, it will actually notify you कि sir, the web meeting, आपका calendar यहीं से notify हो जाएगा. And then you can set up a one-to-one face-to-face meeting or web meeting. So आपका ये सब कुछ automate हो जाएगा. आप खुद ही कर सकते हो इसमें. It will create some credits and all. But overall अगर आपका 10,000 credits, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 1650 रुपीज़ का है, the cost of salaries is much higher. See, harsh as it may sound that मैं बार बार ये job cuts की बात कर रहा हूँ, but the idea is that कि develop the skills and upgrade rather than do do redundant, mundane, repetitive jobs. If you keep on doing repetitive jobs, तो agents वो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा. देखो, इसने आपका lead को generate किया, उसको mail भेज दिया, follow up कर रहा है, और it is doing every day. So I can put this agent to work for months and months.
I will give you a very interesting case study, Ashutosh. I'll just take this question. मैं नेपाल में था, एक कई बैच में कुछ बड़े स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बड़ा खुराफाती दिमाग होता है. So this student was already doing a job in digital marketing company. तो वो समझता रहा, पूछता रहा बड़े सारे क्वेश्चन, लीड जनरेशन एंड उसका. आफ्टर दैट ही जस्ट बॉट दिस अकाउंट, 10,000 क्रेडिट, 20,000 जो भी उसने खरीदा, and he was working from home and he forgot about his job and started doing something else. उसके हर शाम को एक मेल आता था about all the leads that he has generated and the response. वो उसको ऑटोमेटिकली अपने जीमेल से अपने बॉस को फॉरवर्ड कर देता था, वो भी नहीं करता था वो. तो बॉस वॉज वेरी हैप्पी विद हिम कि यार ही इज़ द ओनली गाय हूज वर्किंग. मेरे को डेली ये 10-15 लीड्स दे रहा है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे. एंड देन सडनली ही हैड अ फेस टू फेस रिव्यू विद द बॉस वन डे. And then he suddenly realized मेरे को तो पता ही नहीं था कि एक महीने मैंने करा क्या क्या. And he was at the top among all the people who are working. So it's a real use case study about how people can use AI agents, not get affected by AI agents. So if you really look at here, आप नीचे आओगे, इसके बाद बैक आप इसमें देखोगे जिसमें यहाँ पे आपका लिखा होगा इंटीग्रेशन विद API कीज, एंड it can actually integrate with over thousands and thousands of applications from your Slack, from your Telegram, from your WhatsApp, from your Google Sheets. Whatever leads are generated are directly going into my Google Sheets. यहीं से डायरेक्टली गूगल शीट्स में ही जा रहा है वो लीड जनरेशन जो भी हो रहा है. नाउ सिमिलरली आपके पास सफिशिएंट प्रोजेक्ट्स हैं. यू कैन डू वन मोर प्रोजेक्ट, रिसर्च आर्टिकल जनरेटर. Just to say, basically what I am doing, I am basically doing ki search related articles to this particular topic, search 20 topics every day and send me a tabular column about वही जैसे आप चाहते हो. How do you do it? Title, hypothesis, research methodology, results, gaps and analysis, and send me a summarized detail every day. It will start doing it. एक आप करके देख लो खुद ही अभी. You are a PhD research scholar and every day it starts giving it to you on a mail. And if you want, you can also say CC to my PhD supervisor का email ID. वहाँ पे भी जाना लग जाएगा. It just needs a little bit practice, that's all. With these tools, but this tool is actually very effective agentic AI because it actually can link to your sheets. It can already, आपने देखा यहीं से आपने Gmail भेज दिया. Accept. Now on the tools, add tool, I add everything, accept note, 7 tools. सेज जो उसने करा सिर्फ सेज के आर्टिकल्स में ये वो वाला नहीं, सेज इज आर्टिफिशियल नेम. जैसे उसने लियो एक लीड जनरेटर बनाया था. सो एवरी टाइम यू डू समथिंग अराउंड रिसर्च आर्टिकल, इट पिक्स अप दैट नेम सेज. नाउ बिफोर यू रन दिस इज हाउ मिक्स एंड मैच टूल्स. बिफोर यू यूज रन, अब रन की जगह आप इसको टैब को ऐसे ओपन रखो और यहाँ पे जाओ चैट जीपीटी में जो कि आपके लिए फ्री है. Mix the tools wherever free, use that. And उसमें जैसे randomly, please create a topic for pharma AI research. क्योंकि अगर मैं इसको if I start using this prompt in Relevance AI, maybe it will burn some credits, but the chat GPT is free. So by randomly कोई भी उठा लेता हूँ ये वाला,
I picked up this. Again, go back to this Sage and go to run and say Control V and please select 3 most recent research articles on this subject. एक ही में लिख देता हूँ सारा. Summarize the findings and send the same to एक ही में हो गया. सब कुछ एक ही में हो गया. Run ऊपर जो है. And then you give anything. Give any topic. This is the topic I gave, and I put the agent to work. So what I will add one more line. It has already started finding out. I will add one more line. Do 10 research articles search like this every day for next 2 months. And after that, I will just log out of this relevance AI. This is the beauty of agent. It has nothing to do with your logging in or logging out. Backend में काम करता रहेगा. So long as the credit is open. So long as the credit is open and you don't run out of credits, it will keep working. Sir, I have a question here. In build, when we are doing it, in the end, we just give agent a task. अब बिल्ड में हो कि रन में? बिल्ड तो हमने करा ही नहीं आज. एक build में आता है और एक run में आता है. दोनों में difference है. बिल्ड रन बेसिकली और जस्ट गिविंग सिंपल प्रॉम्प्ट के अंदर को ये टास्क मैंने दे दिया. And if I go to build, Let's see. option आता है give agent a task. Maybe it will do the same thing, but usually we use run. I have never used build here. I have not explored build as of now because generally run में ही सारा हो जाता है. And anyway, I am not doing any relevant real-time work here. I am just teaching. But for you, as if you are using digital marketing real-time, then you should use all these things. So the tasks and the workflow, we have been doing it in bits and pieces, somewhere automated, somewhere. So now if we integrate the entire workflow here, it will all be automated. Well, actually, the idea is that N8N is the best platform for the automations from the cost point of view. Here, it will be using some credits all the time, though it is not very expensive. If you are an agency owner, then this is very, very cheap for you because you are comparing that with the salary that you are paying. But if you are an academician, it's a different issue. So it obviously, क्योंकि मैंने उसको एक instruction दिया था, Gmail भेजो मेरे को, तो I'll again use Lloyd Business School. And it will send me the summarized mail. Now this part, if you see, sending the mail is just one tool. There are thousands other tools. It's not there in ChatGPT. You're not adding that tools there. So this is what it has sent me. It is sending me the mail. The summary. It has found the 3 most recent articles on that topic, summarized them, and it has sent me the mail. So let me check the mail. And if you see, the mail has just now come at 11:47 a.m. And here are the summary. इसने मेरे को 3 आर्टिकल्स के समरी भेज दिया पूरा, with source and everything. आपका भी हो गया होगा. So what is the brain power that we have to use? What is the cheapest way of using AI? And which AI is best for what? So use ChatGPT. Don't use relevance AI.
Do not use relevance AI for any LLM work because it is using your credits. ChatGPT is not using any credit. So use ChatGPT for any find me the topic, find me the research article, do this generation of any topic, ChatGPT. But when it has to do any real work, like ChatGPT will not actually be very good in searching websites and it will not scrap LinkedIn. वो बोलेगा कि I have very ethical, my policies don't allow me to that. It will say all those things. It will not generate leads for you. So it will do lead generation. It will actually send you a mail of everything. It will send you updated every lead on your Google Sheets. It will do everything. All the integrations are there. That part it is very good at. And it is giving you 1,000 free credits per month, not one time. So use those 1,000 credits very judiciously and every month वो अपने आप top up हो जाएगा. Obviously you can use as many Gmail IDs as you want and every Gmail ID gives you 1,000 credit extra. Only once a month. Not you will upgrade for next month. नहीं, every Gmail 1,000 अगर आप यूज़ करो ना करो अगले दिन वो टॉप अप हो जाएगा अगले महीने का आफ्टर 30 days. So it's like unlimited 1,000 credits for. बट 1,000 क्रेडिट्स आप एक दिन में भी कंज्यूम कर दोगे फिर 29 डेज आपका कुछ नहीं कर सकते अनलेस यू बाय दैट सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 एंड इवन इफ यू बाय 10,000 यू कैन स्टिल कंज्यूम दैट डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैवी वर्क यू आर डूइंग एंड एवरी टाइम यू फिनिश दोस 10,000 बट इफ यू सी द वर्क दैट यू हैव डन टुडे आपने यू पीपल हैव डन सम वर्क ना हाउ मच क्रेडिट्स यू हैव कंज्यूम्ड 1,000 में से कितना बचा हुआ है 65. For me it's 65. लेफ्ट No, 935 is left. 935. आपने मतलब कुछ काम ही नहीं किया आज आपने कुछ किया ही नहीं फिर आज That Gmail thing I didn't. वो जाके Gmail का. So it doesn't use that many credits also. It is very cheap. और वो 10,000 क्रेडिट बहुत होता है 10,000 क्रेडिट भी आपका पड़ता है ओनली 1650 रुपीज़ का. मैं ऐसे बड़े सारे वर्कशॉप करता हूँ मेरा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता 10,000 बट अब अगले महीने फिर टॉपअप अपने आप हो जाता है ऑटो रिन्यूअल है वो. It gets topped up, so it's very cheap. It's not that expensive. I'm sure none of you has whatever you have used today. None of you has actually consumed all 1,000 credits. किसने भी यूज नहीं किया सबका वीडियो जनरेटर हो गया बिल्कुल. सर जो एजेंट जो सबसे पहले कर रहा है दैट इज एक्चुअली यूजिंग बाय डिफॉल्ट चैट Which agent? जो सबसे पहले न्यू एजेंट क्या करेंगे फिर हाँ, that is a custom GPT on ChatGPT only. Yeah. So whatever knowledge you are adding, it is acting, it is creating the vector chunks and integrating with the vectors of the ChatGPT. वो RAG use कर रहा है on that. It is not using any other LLM. That explore option is only in ChatGPT. It is not there in Gemini. So any questions for today? I can use few more, but I think that will be too much for today. So to sum up, what we have learned is custom GPT. Custom GPT we have learned today. मैम ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि entrepreneur news every day. Think of any thing like that, and we can create custom GPTs. And the students, they just have to explore that name on their free GPT. उनको URL मत भेजो. उनको बोलो कि just explore this name every day. Go to explore and click on this name. Lloyd BBA और Lloyd BBA entrepreneur, Lloyd BBA digital, अलग अलग नाम से करोगे obviously आप. And then click on that and they will get relevant information for that particular this thing. Then you can use that for image generation. आपका Lloyd BBA आ गया होगा अब तक ये. Or similarly you can create one for your literature review. The format that is prescribed by your university, by your professor, कि मेरे को इसी format में literature review चाहिए, तो give that format to the custom GPT. वो जो भी करेगा और वो सिर्फ फार्मा का ही करेगा. अगर आप बोलोगे कि do only pharma, do only this, it's working right now. So we can create short videos free, up to 40 seconds, YouTube shorts. Image we can create free using custom GPT. We are not using generic chat GPT, and custom GPT we are using for free chat GPT also. The second thing that we saw today is a real agentic AI in work which is doing the lead generation
using some LLM and some tool, and the tool that they use today is Gmail. It is automatically sending Gmail from the inside Relevance AI, and if you give it a task for a few days or few weeks, it will keep doing it. You log out of Relevance AI, doesn't matter. It will keep working in the background. By the way, whatever we are doing, are you guys practicing at the back end? Not practicing? But I think it is very relevant, relevance is very high to the academics. And as you can see that use of AI is becoming a must. It actually increases the productivity a lot. A lot. Any questions? Any questions? ChatGPT का भी कॉलेज का ही पेड वर्जन है for that you create so many. Yeah. You can take a college paid version. I think 2,000 rupees. हाँ, basically these are only meant for students only ना. तो वो जो ChatGPT का है पेड वर्जन, वो आपके अपने पास रहेगा, where you can create custom GPTs yourself. Students can actually access it. And give the name of that custom GPT to the students, and on their free GPT they can use that. They can access the information. But creation आप करोगे. But at a time you can give it to everybody. Whoever is trying to create a workflow, then they can use N10. Send it will tweet that video, because whenever you are creating a video shorts, so it will create a short video for LinkedIn, YouTube and Twitter. तीनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है. इवन इंस्टाग्राम का अलग अलग होता है. Suppose the Lloyd BB entrepreneurial page that we have created. So can we connect it to Relevance AI? Because then no, I think regularly mail will be received by students. Yes, if you actually go to Relevance AI, just go there again. इसमें आप अगर देखोगे which are the tools which are integrations are there, इसमें नीचे आओगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हो ओपन AI का LLM, though it is not very costly because this million tokens का few cents होता है. तो you can use open का LLM because I tried using Gemini का API, इसने ले लिया था, but by default it uses OpenAI. So I will just integrations and API keys. So I will just say OpenAI. It's basically I have to search for it. It will come. You have to find that. जैसे इसमें आपने देखोगे जेमिनी का मैंने ऐड करा हुआ है इसमें. गूगल जेमिनी, ये की मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसमें. सिमिलरली बाय डिफॉल्ट इट यूजेस OpenAI, तो आई विल जस्ट फाइंड आउट द सर्च लिंक एंड गिव इट यू, बट इट हैज अगेन हैज टू बी पेड. OpenAI का फिर अनलिमिटेड है, but it's not very costly. It's a few cents for million tokens. Not very expensive. So it is integrated. There are thousands of integrations which are available here. Thousands. N10 is very good for collecting already collected information को automate करने के लिए. But this is going one step further, which is generating leads and other things. All right, then see you next time whenever we meet.